Hi everyone, welcome to Arpita Sharma classes. I'm Arpita Sharma, your educator, and today we are going to start with National Cyclone Risk Mitigation Project, a very important project that has been in news. It is equally important for your upcoming preliminary examination as well. Okay, so let's start the class. Class शुरू करते हैं without any delay. I hope you all are ready, right? You can also make notes simultaneously in the class, which you can download the class PDF on our Telegram channel, Simplifying UPSC with Ease. हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाकर आप क्लास के पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो. दैट इज सिंप्लीफाइंग यूपीएससी विद ईज. देयर यू कैन गेट ऑल द मटेरियल्स, रिसोर्सेज, notes etc. for your prelims preparation, also for your mains preparation. Okay, so let's begin with the class without any delay. First, let's understand what is this National Cyclone Risk Mitigation Project. What are the prospects of this project? What are the aims, objectives of this project? So when we talk about the National Cyclone Risk Mitigation Project, it is launched by Center. किसने लॉन्च किया है इसको, ये आपको याद रखना है. इसको सेंटर ने लॉन्च किया है. Why? To address cyclone risk in the country, because it's a cyclone risk mitigation project ना. What do you understand by the term mitigation? वैसे अगर आपसे पूछा जाए कि mitigation है तो आप कैसे समझाने वाले हो? What is mitigation? You have heard this word a lot. When we talk about mitigation, it means action of reducing the severity or seriousness or painfulness of something. That is mitigation. ठीक है. मिटिगेट मतलब करना, मतलब क्या होता है कि किसी चीज को लेस पेनफुल या लेस सीवियर या लेस डेंजरस या सीरियस करना. ठीक है, दैट इज मिटिगेशन. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल बिल्डिंग अ डैम, right, or build demolition of structures in the hazard prone areas. That is mitigation. That is the example. So here the center has launched the National Cyclone Risk Mitigation Program or project to address the cyclone risk in the country. Okay, cyclone risk को address करने के लिए ये mitigation project तैयार किया गया है. And what is the objective? See, whenever you study any project, always remember who has launched it and always remember what are the objectives. Objective is to undertake suitable structural and non-structural measures to mitigate the effects of cyclones, to make the effects or impact of cyclones less serious or less severe in the coastal states and union territories of India. पॉइंट क्लियर हो रहा है? तो स्ट्रक्चरल और नॉन स्ट्रक्चरल मेजर्स लिए जाएंगे ताकि साइक्लोन्स के इम्पैक्ट को थोड़ा कम किया जा सके, लेस पेनफुल बनाया जा सके. ठीक है, तो नेचर तो हमारे हाथ में नहीं है, बट यस हम कुछ ऐसे स्टेप्स ले सकते हैं जिससे उनका इम्पैक्ट थोड़ा कम किया जा सके. व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चन यू कैन गेट इन जीएस पेपर 3? Discuss National Cyclone Risk Mitigation Project of Government of India, 250 words. That means around आपके ये 1.5 to 2 pages में आपको explain करना होगा. 250 words है तो 1.5 पेज, 1 से 1.5 पेज लगी जाएगा, maximum 2 page. Okay. So before we move forward with the project, let us look at a small announcement for all of you. एक छोटी सी announcement है आप लोगों के लिए by Unacademy. Unacademy has brought UPSC CSE mega subscription offer for all of you with extended 1-year Unacademy subscription, which is going to be valid till prelims 2022. Now, if you take a 1-year subscription today, that is before 31st March 2021, अगर आप 1 year का subscription लेते हैं, so it will normally it will last till 31st March 2022. But here with this mega subscription offer, this subscription is going to last till July 31st 2022 or prelims 2022, whichever is later. समझ आ रही है बात? Whichever is later, यानी कि ये सब्सक्रिप्शन अगर आप आज ले लेते हो, मार्च 31 2021 से पहले ले लेते हो, तो ये जुलाई 31 2022 यानी कि 1 year plus 4 months एक्सटेंडेड आपको मिलेगा. और प्रीलिम्स 2022 या जब प्रीलिम्स होगा तब तक ये एक्सटेंड रहेगा, विच एवर इज लेटर. लास्ट ईयर प्रीलिम्स गॉट पोस्टपोन ना. लास्ट ईयर क्या हुआ था, प्रीलिम्स पोस्टपोन हो गया था ना, अक्टूबर में हो गया था. तो ऐसे अगर बाय चांस एक एग्जाम्पशन लेकर चलते हैं कि प्रीलिम्स पोस्टपोन हो जाता है, अगर अगस्त या अक्टूबर में होता है, तो ये सब्सक्रिप्शन आपके प्रीलिम्स 2022 तक वैलिड रहेगा. ठीक है, विच एवर इज लेटर. अगर नहीं होता, टाइम पर होता है तो वेरी वेल एंड गुड. जुलाई 31 2022 तक तो ये वैलिड है ही है सब्सक्रिप्शन, 4 months एक्स्ट्रा आपको मिल ही रहे हैं. बट प्रीलिम्स अगर पोस्टपोन हो जाता है तो ये प्रीलिम्स तक चलेगा. ठीक है, ये बात समझ आ गई, विच एवर इज लेटर. So this is the offer and it is going to last till March 31st 2021, यानी कि 31 मार्च 2021 तक का ऑफर है ये. उससे पहले अगर आप सब्सक्राइब करते हो तो आपको ये ऑफर मिलेगा, उसके बाद ये ऑफर खत्म हो जाएगा. ठीक है, सो
फ्रॉम टुडे न्यू बैचेस हैव स्टार्टेड ऑन अनअकैडमी प्लस। 24 मार्च से नए बैचेस स्टार्ट हो गए 2022 के 2023 के लिए। एनसीईआरटी बैचेस लॉन्च हो चुके हैं। लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं वीडियो के नीचे। आई हैव गिवन यू द लिंक विद below the video, so you can go and subscribe today, and also you can get 10% discount if you use this code arpita10। अगर आप लोग ये कोड यूज कर लेते हो ना arpita10, तो आपको डायरेक्टली 10% ऑफ मिलेगा आपके सब्सक्रिप्शन पर। ओके, सो दिस इज द important announcement for all of you from Unacademy. So go and subscribe now. We have India's top educators who are going to transform your UPSC CSE journey, including ex-bureaucrats as well. So now let us understand about the project. Now this project is going to be implemented by, first important point, center launch कर रहा है, implement कौन करेगा, launch किया, announce किया center ने, इसको असर में कौन लेकर आएगा, National Disaster Management Authority. Okay, and which ministry is going to look after it, कौन सी ministry के under है ये, Ministry of Home Affairs. Okay, and who will coordinate in this project, कौन coordinate करने वाला है, we have National Institute for Disaster Management and state governments who are going to coordinate with National Disaster Management Authority to implement this project. यहाँ तक point clear हो गया? Now I guess you are retaining things. First we have studied that it is launched by center, implemented by National Disaster Management Authority. It will be coordinated with the help of state governments and NIDM, यानी कि National Institute of Disaster Management. Okay, and it is under the aegis of Ministry of Home Affairs. The project has identified 13 cyclone prone states and union territories with different levels of vulnerability. And who is going to assist financially this project? It is assisted by World Bank. Financially कौन assist करने वाला है, help करने वाला है इस project में? World Bank help करेगा. Right, in 1960 we all know World Bank also brokered the Indus Water Treaty between India and Pakistan, remember? Now these states and union territories have been classified into two categories based on the frequency of occurrence of cyclones. कितनी जल्दी cyclones आते हैं उसके basis पे दो categories में divide किया है states और union territories को. First category one is higher vulnerability like Andhra Pradesh, Gujarat, Odisha, the coastal areas, Tamil Nadu, West Bengal. And second category is lower vulnerability states like Goa, Kerala, Karnataka, Maharashtra, Pondicherry, Lakshadweep Islands, Daman and Diu, Andaman and Nicobar Islands. Okay, this will be the category 2. इतनी बात समझ आ गई आप लोगों को, याद हो गया इतना? चलो ठीक है, वेरी गुड. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द कंपोनेंट्स ऑफ द प्रोजेक्ट. अब इस प्रोजेक्ट्स के ना कंपोनेंट्स क्या हैं? नाउ ओवर हियर यू विल सी दैट द कंपोनेंट्स ऑफ द प्रोजेक्ट आर, फर्स्ट इज इम्प्रूव्ड अर्ली वार्निंग डिसेमिनेशन सिस्टम. जल्दी से अर्ली वार्निंग सिस्टम, डिसेमिनेशन सिस्टम है, तो बिफोर द साइक्लोन कम्स और impacts the particular area, early warning messages will be sent. Second is enhanced capacity of local communities to respond to disasters. That means to train the locals how to deal with these disastrous situations. Okay. Third is strengthening the DRM capacity at central, state and local levels in order to enable mainstreaming of risk mitigation measures into overall development agenda. So this risk mitigation measure will be added in the overall development agendas of the states and union territories. Okay, and fourth will be improved access to emergency shelter, evacuation and protection against the cyclones, floods in higher areas. So these will be the component of the project. These will be the part of the project when this project will be launched. जब ये project launch कर दिया जाएगा पूरी तरीके से, इसमें ये components या parameters को ध्यान में रखा जाएगा. Okay. So this was all about the National Cyclone Risk Mitigation Project that we have discussed today. Do attempt this question now after the class. Class के बाद इस question को जरूर attempt कीजिएगा, ठीक है? Try to write the answer to this question within 1.5 page. कोशिश कीजिएगा, discuss कीजिए पूरा. You have to explain who has launched it, what is the project, what are the components, what is the provisions of the project. Okay. So on this note, we are wrapping up the session. Thank you everyone for participating in the class. And also you all know that the Unacademy Mega subscription offer is valid till 31st March 2021. So go subscribe now. On this note, we are wrapping up the class. Thank you.